Hi guys, in this video I'll talk about shift in center of mass or shift of center of mass. What happen if there is no external force on the system, ACM will be zero. This is a very important statement, that if there is no external force then ACM will be zero. Okay, so center of mass will remain at rest if it was at rest. Okay, the important thing is only this: ACM is zero, and if CM was not moving, and it will not move, so VCM will be constant and it will remain zero if it was zero. तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर चल रहा था किसी वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा. मोस्टली हम इस वीडियो में वही केसेस देखेंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था और वो रेस्ट पर रहेगा. तो अगर ऐसा है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी zero. Okay, and the change in position of center of mass m1 into position change of mass m1, m2 into change in its position, ऐसे करते करते जितने भी masses हैं उनका sum divided by the total mass. नीचे वाली टर्म का कोई यूज ज्यादा नहीं होने वाला क्योंकि जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं. वैसे अगर कोई चेंज पूछे तो चेंज की वही डेफिनेशन है पूरी. डेल्टा r1 डेल्टा r2 क्या है? they are the changes, but they should be measured from a fixed point or line. important बात है, ठीक है, बहुत important बात है. they should be measured from a fixed point or line. okay, so पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. we have to find the displacement of the plank when the boy moves from one end on the other. इसमें क्या है, ये जो प्लैंक रखा है किसी सरफेस पर, दैट इज कंप्लीटली स्मूथ, so there is no friction, but there is friction between plank and boy. यहाँ friction है. okay, there is friction but there is no friction here. यहाँ surface smooth है. okay, important बात है. तो अब क्या होगा, जैसे ही ये लड़का आगे की तरफ चलने लगेगा, लड़के पर फोर्स आके लगेगी और प्लैंक पर फोर्स पीछे, तो प्लैंक थोड़ा सा पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा. मान लेते हैं थोड़ी देर बाद के पोजीशन अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो थोड़ी देर बाद प्लैंक यहाँ आ चुका है और लड़का इधर इस एंड पर आपको नजर आ रहा है. ओके, दिस इज द बॉय विच हैज रीच्ड हियर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय. मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक जो है वो x है. वैसे मैंने डायग्राम गलत बनाया, मगर इससे भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, क्यों? क्योंकि आपके लिए जो x की वैल्यू है वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है, वैसे अगर आदमी लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो प्लैंक राइट की तरफ मूव करना चाहिए था, बट इट डजंट मैटर. आई मेड दिस मिस्टेक इंटेंशनली जस्ट टू मेक श्योर कि आप अगर कोई भी डायरेक्शन ऑपोजिट एज्यूम कर लेते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आंसर अपने आप करेक्ट हो जाता है. ओके, तो मान लिया दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव किए, so the displacement of the boy will be L plus x and displacement of the plank is x, and this direction is assumed to be positive. So what happened? Change in position of center of mass is how much? M. Mass of boy is small m. Mass of boy is capital M. So this is mass of plank and its displacement is plus x. Mass of boy capital M and its displacement is L plus x, and the total displacement of center of mass will be this, but that is nothing but zero as there is no external force on the system. So on equating we get x equal to, सॉल्व किया हमने इसको, तो x की वैल्यू आ रही है कैपिटल एम एल ओवर m प्लस कैपिटल M with a minus sign. okay, so what does it mean? माइनस साइन है. so what does it mean कि जो x हमने एज्यूम किया, जिस डायरेक्शन में x हमने एज्यूम किया, दैट इज रॉन्ग. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन. वो हमने उल्टा मान लिया है. मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों ऐसा है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन किधर डिस्प्लेस करेगा तो कुछ भी मान सकते हैं.
and the equation will rectify itself. तो हाँ, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें कि ये कैसे डिस्प्लेस कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। उछल उछल के जा रहा है, चल चल के जा रहा है, या बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। जैसे ही आदमी इस एंड पर पहुंचेगा, प्लैंक खिसक चुका होगा। अब प्लैंक का एक रियल डायग्राम बना देते हैं जैसा कि वो दिखना चाहिए। जैसे ही आदमी इस साइड मूव किया, प्लैंक ने इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, और प्लैंक कुछ थोड़ी देर बाद इतना दूर पाया जाएगा जब आदमी इस किनारे पर पहुंच जाएगा। तो ओके, तो man has moved towards left and the plank has moved towards right. Okay, so this is the displacement of man and plank. In the next question, there are two boys which are pulling each other on a smooth floor. Find the displacement of boy 1 whose mass is m1 if the boy 2 displaces by x2. As they are on a smooth floor, so there will be no external horizontal force on the system. All these forces, tension, force on man by rope, or force on rope by man, are internal forces. So there is no external force, hence cm acm will be 0. acm will be 0, and center of mass was at rest, so it will remain at rest. It implies change in position of center of mass will also be 0. Okay, so when change in position of center of mass is 0, we can say the displacement of, let's say, m2 is x2 towards left, so it will be minus x2 plus m1 into x1 divided by m1 plus m2 will give you 0. So on solving, we will easily get x1 as m2 x by m1. So this is the displacement of y1, and we can use the definition of center of mass also. But and where they will meet, as cm is not moving, so they will meet at center of mass. This is nothing but x1, and this length is x2. Okay, so this boy will get pulled to this point, and this boy will also get pulled to this point. The center of mass will not move at all. Okay, in this diagram I have assumed that m1 is heavier than m2, that is why center of mass is nearer to m1.